गुजरात विधानसभा द्वारा 2026 में पसार करायेला अशांत धारा सुधारा विधेयक ने लईने शहर में चर्चा ने आनंदनो माहोल जोवा मळी रह्यो छे। आ नवा कायदा हेठळ हवे अशांत विस्तारनुं नाम बदलीने निर्दिष्ट विस्तार करवामां आव्यो छे। आ सुधारा विधेयकनी मिलकत धारकोने मोटी राहत मळशे। हवे तेओ पोतानी मिलकते गिरो मूकीने सरळताथी बैंक लोन मेळवी शकशे, जे अगाऊ मुश्केल हतुं। साथे ज कलेक्टरने सुओ मोटो तपास करवानी सत्ता आपवामां आवी छे, જેથી ગેરકાયદેસર મિલકત ટ્રાન્સફર અટકાવી શકાય। કાયદા મુજબ કોઈપણ ત્રીજી વ્યક્તિ તે વિસ્તારમાં રહેતી હોય તો મિલકત વેચાણ સામે વાંધો ઉઠાવી શકશે। विधानसभा आ कायदो मंजूर करवानुं मुख्य कारण ए हतुं कि गुजरात सरकारे 15 ऑक्टोबर 2020 ना दिवसे अशांत धारा सुधारक विधेयक रजू कर्युं। आ सुधारक विधेयकनी सामे जमियते उलेमा हिंद हाईकोर्टनी अंदर आ विधेयक रद्द करवा माटेना आ विधेयकनी केटली कलम रद्द करवा माटेनी રીટ पिटिशन दाखल करेली हती। आ રીટ पिटिशनना कारणे असरग्रस्त लोकोने खूब नुकसान थई रह्युं हतुं। सरकार जे आ कायदामां जे रिजल्ट लाववा मांगती थी ए रिजल्ट पर खूब मोटी असर थवा मांडी हती अने ए असरना खाळवा माटे हवे रजूआत करनाराओ एटले के जे असरग्रस्त करनाराओ छे, नाराज छे, ए लोकोने सांभळवा खूब जरूरी बनी गया हता अने कायदामां एमने सत्तावार रीते कायदामां एमने पक्षकार तरीके दाखल करवामां आवे ए जरूरी बनी गयुं हतुं अने एटला माटे सरकारे हवे नाराज व्यक्तिओने पक्षकार तरीके दाखल करवानो निर्णय लीधो छे। आनाथी समाजने शुं फरक पड़शे? आनाथी समाजने ए फरक पड़शे कि हवे अशांत धारा हेठळनी कोईपण मिलकतदार के कोईपण समूह के कोईपण ट्रस्ट के कोईपण जाहेर समितिओ पोते पोताना विस्ताરના रक्षण માટે પોતાના વિસ્તારમાં થતી મિલકત તબદીલીઓ માટે સરકારમાં હવે કાયદેસરની પક્ષકાર બનીને રજૂઆત કરી શકશે અને એમની રજૂઆતોના આધારે કલેક્ટર નિર્ણય લેશે અને જેથી કરીને મિલકત સંબંધી મિલકત જે રીતે મિલકતો છોડીને જતા હતા હવે લોકોને છોડીને નહીં જવું પડે પણ પોતાની મિલકત બચાવવા માટે કલેક્ટરની અંદર પક્ષ મૂકવા માટેની એક સાચી ન્યાય